Hello everyone, here I am Natipriya before you, and we are going to discuss dying declaration in this particular video. So, before understanding as to what is the dying declaration and the different peer provisions related to this, and also the case laws, it is very much important to first learn about some of the terms which we will dealing with when we will deal with the peer provisions and also with the case laws. So, the first term is corroboration. So, in layman language, corroboration means when you have one evidence and you are not satisfied with that particular evidence and you need to corroborate it with or you need to match it with other material facts. For example, अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि ए ने मेरी डेथ की थी और जब मेरी डेथ नहीं की थी ए ने मुझे मारने की कोशिश की थी और वो मेरे होटल के रूम में आए थे उनके पास वेपन था एंड ही अटेम्प्टेड रेप ऑन मी एंड देन he tried to kill me. Okay, so if that person is saying that in hotel room everything has happened, all these scenes have taken place, so we have the register, we have the evidence of registry, the registration book at the reception center where we can go and check as to that particular person has came or not and on that day and on that days also. Okay, so if we have the material facts, so it is better to corroborate or match the what the dying person has said so that better justice will be promoted and any innocent will not be penalized with any punishment which is not meant for that particular person. So in some cases, as we will discuss it later on, that dying declaration only dying declaration is can be the sole evidence, and on the basis of only dying declaration, justice can be done, and the decision can be provided, no matter whether other evidences are available or not. But in some cases, there is a good reason to believe for the judges that even the dying person can say lie. So in this case, or even if there is a confusion as to whether the dying person has not said exactly what he or she is trying to say, in this case also, in these cases also, corroboration is required. In the corroboration, we try to match what the person's statement is and what the material evidence is saying. Then comes the second term, which is veracity. Veracity is a truthfulness test and the polygraphy test, and there are different instruments using which we can test whether the person is telling is true or false. Okay. Then comes the transaction of circumstances. ट्रांजेक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस मीन्स अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करने जा रहा है उसके बीच में वो डिफरेंट इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होगा और उस अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं पता चल रहा है कि वो डेथ किया है या जो भी मर्डर हुआ है या जो भी क्राइम टेक प्लेस हुआ है वो किया है या नहीं किया है, तो इवन अगर आपको उसके बीच के इंसिडेंट का पता है तो आफ्टर कनेक्टिंग द डॉट वी कैन रीच टू द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, एग्जैक्ट वी कैन कैच द एग्जैक्ट एक्यूज. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति को मर्डर करवाना है किसी भी व्यक्ति का और उसके लिए उसे 20 लाख रुपए देने हैं तो वो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो एटीएम जाएगा वहां से पैसे निकालेगा. तो एटीएम से 20 लाख का ट्रांजैक्शन करना और वो जाके फिर एक्यूज को दे देना, जो व्यक्ति मारेगा, जो व्यक्ति मर्डर कॉज करेगा किसी पर्सन का ए के बोलने पे अगर ए निकाल रहा है पैसे तो उस केस में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है मर्डर ऑफ डेथ, मर्डर से या फिर किसी भी क्राइम से. लेकिन इससे इन्वेस्टिगेशन बहुत आसानी होगी बिकॉज आप 20 लाख रुपए निकाले ही क्यों, सिर्फ उसी डे में क्यों निकाले और आपने उनको क्यों दिया जिन्होंने फिर लेटर ऑन मर्डर किया है. ठीक है, तो इससे भी हम पहुंच सकते हैं एग्जैक्ट कॉज पे और एग्जैक्ट एक्यूज पे. सो ट्रांजेक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट टू कलेक्ट द एविडेंस, टू कलेक्ट द एग्जैक्ट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन रिलाई ऑन द टाइम डिक्लेरेशन. देन कम्स द मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट. Medical fitness report is simply a report given by the doctor which states that the person who is dying is in medically fit condition to give declaration. Like in burning cases, it happens now that more than 80% burning in if a person is more than 80% burned, in this case, there is no chance for a person to speak. That was a very pathetic condition for that particular person who is dying. So इसका जरूरत इसलिए क्योंकि बहुत बार डॉक्टर्स को भी हम ब्राइब दे देते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं अपने आप को बचाने के लिए वो उनको ब्राइब दे देते हैं और कह देते हैं कि अगर ये कोई डिक्लेरेशन देता भी है तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि ये उस कंडीशन में था ही नहीं कि ये कुछ बोल पाए. ठीक है, बिकॉज डाइंग डिक्लेरेशन को हम डायरेक्ट एडमिट करते हैं
एज एन एविडेंस, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सिर्फ इसके बेसिस पे ही जज अपना डिसीजन दे सकते हैं। तो इसलिए मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट को भी किया जाता है। So these are the terms which we will be dealing with under our bare provisions and also in the case law. Now comes the bare provision which is dealing with the dying declaration. So our evidence act, section 32 is there, and the sub clause of section 32, that is sub clause 1, this is dealing with the dying declaration. So here is the bare provision which states that cases in which a statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc. is relevant. It says that in case there are some cases in which only the statement, okay, only the statement or the relevant fact, like if a person who is जो मरने वाला है वो कोई स्टेटमेंट देता है या फिर कोई फैक्ट का बता देता है कुछ कि आप वहां जाइए और आपको ऐसा कुछ मिलेगा और वो मिल जाता है, ठीक है, वो एविडेंस हमें वो एविडेंस हम कलेक्ट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा। तो कुछ केसेस में जैसे जनरली क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को नहीं एज एन एविडेंस इंक्लूड करते हैं जब तक वो किसी और भी विटनेस से मैच नहीं करे, लेकिन ये एक्सेप्शन है उसका। और सिर्फ जो व्यक्ति मर रहा है उसके स्टेटमेंट को या फिर मर रहा है या फिर उसके बोलने के बाद वो मिला ही नहीं, लाइक प्लेन क्रैश हो गया और उसकी बॉडी को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाए, तो वैसे व्यक्ति अगर कुछ बोल के जाते हैं तो उसको हम रेलिवेंट मानते हैं, ठीक है। अब है कि वो ऐसा क्या बोल के जाते हैं, क्या उनका बोला हुआ हर बात एविडेंस के रूप में इंक्लूड किया जा सकता है? तो द आंसर इज नो, ओनली द स्टेटमेंट गिवन बाय द डाइंग पर्सन which is related directly to the cause of death, or if it is related to the transaction of circumstances. Just a minute. If a person is saying anything which is directly related to the cause of death or any of the circumstances of the transaction which resulted into his death, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ ये नहीं मुझे मारने की कोशिश की, मैंने देखा ये वेपन लेके आए थे और उन्होंने ही गोली चलाई थी, so this is directly related to the cause of death. On the other hand, there might be possibility that the person who is the victim and he or she has not died yet is not able to recall, or he is not in a condition to recall as to whether who has caused the death directly, but but he or she is able to recall some transaction related to the death, like if he is saying that मुझे ये नहीं पता कि ये गोली किसने चलाई लेकिन मेरे रूम में ए और बी दोनों थे, ठीक है, तो ये हो गया कि आपको डायरेक्टली नहीं पता कि आपको मारा किसने, लेकिन आपको ये पता है कि ए और बी दोनों थे, तो देयर इज अ हाई चांस दैट विदिन ए और between A and B, one will be the accused. So this is the circumstances of transaction which resulted into his or her death. So इन दोनों ही केसेस में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो हम उसको डायरेक्ट एडमिट करते हैं एज एन एविडेंस। So now revising this bare provision, if a person who is dying saying anything which is related to his or her cause of death or even related to the other victim, there is a chance that one person is dying and in that incident more than one victim is there. So if the cause of death, if he or she is saying anything which is related directly to the cause of death or the circumstances of the transaction which resulted into his or her death, so either he is saying directly as to who caused the death or indirectly. In both cases, the statement of the dying person is admissible under the Evidence Act. Now comes on the admissibility of dying declaration. Why we are admitting dying declaration? Why we admit the statement of a person who is on the deathbed? There is a high chance that even a person who is dying can say lie. There is a high chance, isn't it? Because if a mother is dying, so even if a mother is dying, she will try every method to protect at least his children. So if the murderer come to his room or come to the hospital or come anywhere where she is on the deathbed and try to threaten that particular mother that just give the statement what we are wanting to give you, otherwise we will kill your otherwise we will kill your daughters or your family members. So in this case also even a dying person will obviously say lie only. So but despite this lacuna, why we admit the dying declaration directly? So
This is because our court, our law pre-assumes that a dying person cannot lie. It means हमारा ये कानून मान के चलता है कि एक मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा. And because हम ये मानते हैं कि मरने के बाद we either go to hell or heaven. और मरने टाइम पे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम कोई ऐसा काम करें जो राइटियस सिग्नेचर नहीं हो, हम झूठ बोले. जैसे फॉर एग्जाम्पल when गांधी जी जब गांधी जी का मर्डर किया गया था उस टाइम पे उनके मूवी था हे राम. So if a person knows that he or she is going to die, they used to recall God, or they at least don't do this kind of thing which is not righteous in nature. So हमारा कोर्ट ही मान के चलता है और इसलिए हम डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन निर्भया रेप केस ऑल्सो, though there are other evidences also also found by the investigation team, but Nirbhaya has have also given the statement which has directly admitted as a dying declaration, and on the basis of this, the investigation further went on, and also the justice was promoted on the basis of dying declaration also. Also, the admissibility of this dying declaration is important because let's assume that there is a room, and in that particular room the incident happened, the incident of rape, murder, anything happened, and in that particular room only the two person was available there. The one was victim and the other one was accused. So if accused will never tell to anybody, neither to the justice system, neither to even anybody that I have killed her, I have raped her. So, and the other person who is the victim, she is going to die. So, in this case, we have to release that accused, and which is not good for the society, not for our country. So, in this case, if the dying person is saying something, so we have to admit it so that justice will be delivered and justice will not be compromised. Even if a person who has died before dying, if he has registered any FIR, so that FIR is also admissible as a dying declaration. Now comes the question of medical fitness report. So there are issues in different cases कि हमें मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट को कंपलसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज चांसेस आर हाई कि आप मरते हुए व्यक्ति को भी मैनिपुलेट कर पाए, या फिर जो डिक्लेरेशन ले रहा है डॉक्टर्स मजिस्ट्रेट वो भी मैनिपुलेट हो सकते हैं. देयर इज अ हाई चांस. तो लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 का एक केस था. उसमें ये था कि वो क्लेम कर रहे थे कि जो व्यक्ति डैंग डिक्लेरेशन दे के गया है एक्यूज के साइड से, डिपेंडेंट के साइड से ये क्लेम किया जा रहा था कि वो उस कंडीशन में ही नहीं था कि वो कुछ बोल पाए. तो जब वो उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कुछ बोल पाएगा तो फिर हम उसके डिक्लेरेशन को कैसे माने कि ये वही बोल के गया है. ठीक है, तो उसके लिए उनका ये जो जजेस से उनका ये अपील था कि आप मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट को निकालिए और ये चेक करिए कि क्या मरते टाइम वो पर्टिकुलर पर्सन उस कंडीशन में था कि वो बोल भी पाए. तो इसमें जस्टिस का ये कहना था, जुडिशियली हमारे जजेस का ये इस पे डिसीजन था कि हम मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट को कंपलसरी नहीं कर सकते, बिकॉज जिस दिन से मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट को कंपलसरी कर देंगे वहां पे चांसेस और हाई हो जाएंगे कि डॉक्टर ब्राइब लेंगे, डॉक्टर किसी भी इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, डॉक्टर को भी डरवाया जा सकता है, उन्हें भी मारने की धमकी दी जा सकती है, या उन्हें बहुत पैसे की लालच भी दी जा सकती है, और उस केस में हम डैंग डिक्लेरेशन को मैनिपुलेट करने के चांसेस और भी हाई हो जाएंगे. तो लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र was the first case in which court has said that medical fitness report will not be compulsory in case of admitting the dying declaration. Then comes the Kohli Chunilal versus the state of Gujarat. In this also, a court has said that the medical fitness report is not required by doctor for admitting the dying declaration. If court is satisfied, it is admissible. If court is not satisfied, if court have a reasonable ground to believe that even a dying person is telling lie in this particular case, then the court will order for corroborating the evidences with material evidences, which we have already read beforehand. Then comes the third case, that is P.V. Radhakrishnan versus the state of Karnataka. Here, the person who has given the declaration, the dying person, has suffered 85% burn injuries. And 85% burn, in case of 85% burn injuries, there is a very less chance that a person is in a condition to even speak. So Supreme Court
said that no, we will again not rely only on the medical fitness report, and if the dying person has given any declaration, so it will be admitted only if it is not infirm, means it is not false. And if a court have a reason to believe that that is false, then already we have discussed that then the court will order for the corroboration and for investigation team to further do more investigation and corroborate whether the statement was matching with the material evidences or not. Then comes the second issue as to corroboration required or not, the same thing. So not required in all cases, but there is an exception where the corroboration is required, means जो मरता हुआ व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों को मैच कराने के लिए वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है. uh, let's assume that this is a dying person. Dying means he or she has not dead yet, but at the verge of death. At the deathbed, he or she may die, may not die, but the chances are high that he or she is going to die. So if a person is in hospital and he is the accused, he or she is the accused, and this person is giving any declaration, dying declaration. Okay. So there is no need to corroborate it with other material evidences. But there are exceptions to this. In two cases, we do the corroboration, or what we can say that we match whether the declaration was given is right or not. And what are these two cases are? So these two cases are, the first one is that when multiple dying declaration is there. मान लीजिए कि कोई राइट हुआ है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो मरता हुआ व्यक्ति है वो एक नहीं है, 5-6 लोग मर रहे हैं और 5-6 लोगों को उस इंसिडेंट का पता है. उस केस में एक महिला कुछ और बोल रही है, दूसरी महिला कुछ और बोल रही है, तीसरे कोई बच्चे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं. तो उस केस में देयर इज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज एज टू हु इज टेलिंग द ट्रूथ और हु इज टेलिंग द हु इज लाइंग. Okay, so there is no consistency in this dying declaration. So in this case, dying declaration is not admitted directly, and before its admissibility, we cross-examine all this dying declaration, and then we come to the conclusion as to which dying person was telling lie. The other is that when a court has sufficient reason, if court is in a doubt as to the dying person is infirm in nature, or she or he is telling false declaration, he or he is giving the false declaration. In this case, also the court can order for the corroboration. So only in these two cases corroboration is required, otherwise not. Then comes the third case. The cases are important because in the entrance examination or even in the semester examination, the facts are directly related to the facts of these cases only. The facts are rarely come from the other the facts are almost in every, especially entrance examination, the facts are totally relatable with the cases, the famous cases especially. So the third case is Sudhakar versus the state of Maharashtra. Here the court ordered for test of common reasonableness is applied to check the truthfulness of a statement. This is applied in those cases where if a dying person is saying something which is not on the basis of common sense, we can assume that this is not true. So in this case, we check that particular truthfulness with other material evidences. Then comes the fourth case, that is Kushal Rao versus the state of Bombay. This is a very famous case because in this case, Supreme Court has given multiple guidelines which should be followed before admitting the dying declaration or before even registering the dying declaration. अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके आप डिक्लेरेशन को कैसे एडमिट करेंगे, आप उसको लिखेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, उसका प्रॉपर एक गाइडलाइंस दिया गया था. एंड दिस केस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज these guidelines are repeatedly told by the court to followed by in every cases which is in which the witnesses are the related to the dying declaration. So first one is that the declaration must be clear. If a person is saying that if the dying person is trying to saying Mohit and he is just telling mo like this, so the other person who is registering that particular declaration, he or she cannot pre-assume that she is trying to say Mohit only.
Okay, so she can say Mohan also. So it must be clear if the voice is not clear. In that case, the statement should not be recorded in this case. That must be exactly the same word in which the declarant made a statement. Different persons come from different regions, they speak different languages, they have different accents. So it must be the language must be written in the same words or in the same language in which the dying person has told. Because if we will experiment or if we will try to manipulate the words, then there's a high chance that this will cause injustice somehow. Then comes as to who can record the dying declaration. So dying declaration can be recorded by competent authority. The best it will be if it will be recorded by magistrate. But in all cases, like if a person is dying, there are high chance that the person have very less time, and when magistrate will come, he or she will come to the hospital. So it is a time taking process. So in this case, doctors can also record the statement. But again, there are some cases in which the person who is the victim, he or she is not in a condition even to reach the hospital. So in this case, the person who were present at the spot where the crime has happened, so these persons can also tell as to what the dying person has said to them spot where the crime has happened, or the competent authority or the doctors, anybody can record the dying declaration. But the best is when the competent authority, but it is best if it will be recorded by magistrate, because then it will directly admitted into the court without any corroboration, and directly just after getting the declaration, even on the next date, decision can be taken by the competent court. Again, this is that must be admitted as an important and weightage evidence. There's a huge weightage to the dying declaration evidence. Then the other guidelines are that the declaration must be regarding the cause of death. We have already read it in the Bail provisions, so that is section 32, section 1, subclause 1, that the statement must be related to cause of death, and it should not be any other story which the dying person has said. Excluding that stories, the only the statement which is very much related to the cause of death or the circumstances of the transaction of his death will be admitted as an evidence. Huh. Then comes that what if the person who is dying now, he or she is now well after getting good treatment, now he is alive. So in this case, that evidence is also admitted as a very weightage evidence, but then we require even other witnesses to tell as to what happened at the crime scene, and then then the person who was at the verge of dying will be admitted as a normal witness. Again, the Supreme Court has given the guideline as to when corroboration is required and when not. Only in two cases the corroboration is required. The first one is that when the multiple dying declaration was there and there is a confusion as to which person is telling truth and which who is telling the truth and who is telling the lie. So in this case, corroboration with the material evidence is required. Now comes the Patel Hiralal Jyoti Ram versus the State of Gujarat 2002 case. This is a very interesting case in which the facts are like that. यहाँ पे एक लेडी होती है, उनके हस्बैंड होते हैं, इन लेडी का नाम होता है आशा बेन. या सो इस लेडी का नाम होता है आशा बेन, इनके हस्बैंड होते हैं जिनका नाम होता है विनोद भाई, और हीरालाल एक व्यक्ति होते हैं जो स्कूटर से आ रहे होते हैं. ये आशा बहन की एक बहन होती है शायद इस केस में, जिनका अफेयर होता है हीरालाल के साथ, और वो इस बात को कि हीरालाल जो है मेरी बहन के साथ कुछ इनका अफेयर है लाइक दैट, ये इसको अपने मोहल्ले में जिस सोसाइटी में रहती है उस सोसाइटी में इस बात को ये फैला रही होती हैं. तो हीरालाल इससे बहुत गुस्से होकर इनके पास आते हैं जब ये कहीं जा रही होती हैं, और ये इनके ऊपर पहले वैसे पेट्रोल, आई थिंक पेट्रोल या फिर कोई जो बर्निंग लिक्विड होता है वो पहले फेंकते हैं इनके ऊपर, एंड देन मैच स्टिक से वो इनके ऊपर जला के मैच स्टिक को फेंक देते हैं. रोड पे ही ये जलने लगती हैं. आसपास में पानी रहता है, कुछ ऐसा अवेलेबल होता है सोर्स ऑफ वाटर, जिससे आसपास के लोग कोशिश करते हैं कि ये बच पाए, एंड देन इनको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में.
ये जो अपना डिक्लेरेशन देती हैं, पुलिस के सामने भी देती हैं, मजिस्ट्रेट भी तब तक पहुँच चुके होते हैं और भी 3 लोग इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, जिसमें उनके हस्बैंड भी एक शामिल होते हैं, विनोद भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन-कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिसको मान्यता दिया गया है हमारे कोर्ट में। तो हे आशा बहन कहती हैं जो हीरा लाल थे वही मेरे एक्यूज़्ड हैं, उन्होंने ही मुझे जलाया है। वो पेडेस्ट्रियन मतलब रास्ते में मिल गए थे मुझे जब वो उन्होंने मुझे जलाया। नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी। इन्होंने जो भी बताया कि हीरालाल ही मेरे एक्यूज़्ड हैं, ये इन्होंने पेडेस्ट्रियन को बताया, जो लोग आस-पास जा रहे थे उनको, अपने हस्बैंड को बताया, पुलिस को बताया, मजिस्ट्रेट को बताया एंड डॉक्टर को बताया। तो एक व्यक्ति अगर पाँचों लोगों से एक ही बात कह रहा है, तो देयर इज़ अ हाई चांस दैट दिस इज़ वेरी मच ट्रुथफुल इन नेचर। देन हर डाइंग डिक्लेरेशन वाज़ दैट हीरालाल इज़ द कल्प्रिट। उन्होंने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में साफ-साफ बोला कि हीरालाल ही मेरा कल्प्रिट है। हियर वी कैन apply section 32 subclause 1 which state that dying declaration related directly to the cause of death of the victim is admitted in the court of law as an evidence. Okay, so this is that Hiralal is the culprit. This is directly indicating as to who has caused the death. So सेशन जज ये केस पहले सेशन जज के पास जाता है, स्टेप पर चलते हैं ना, पहले सेशन जज, फिर अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो जब सेशन जज के पास ये जाता है केस, तो वो कहते हैं कि ये डिक्लेरेशन इनफिर्म है। डिक्लेरेशन मीन्स डाइंग डिक्लेरेशन। इनफिर्म है मतलब ये झूठा है, क्योंकि एक लाइटर फेंकने से वो कैसे फायर कैच कर सकता है उसका साड़ी। ठीक है, और शायद वो सिल्क की साड़ी पहनी होती है, शायद ये जो भी साड़ी हो। तो वो बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक अगर आप माचिस जला के फेंक देते हैं और पहले से कुछ अगर आप किरोसिन फेंकें तो इतनी जल्दी फायर कैरी कर लेगा। आसपास में पानी भी था, तो वो बच भी सकती थी, खुद को बचा भी सकती थी। तो ये बोलते हैं फॉल्स है। देन द केस गोज टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यहाँ पे डांटते हैं सेशन जज को और ये कहते हैं कि ये तो बेसिक साइंस भी नहीं समझ पाते हैं, है ना? समझ पा रहे हैं, जब जुडिशरी का एग्जामिनेशन होता है तो देयर इज अ कंपल्सरी साइंस पेपर, देयर इज अ कंपल्सरी पेपर ऑफ एलिमेंट्री साइंस। सो इवन द बेसिक एलिमेंट्री साइंस, द बेसिक साइंस कैन टेल अस दैट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट अगर आप कोई बर्निंग लिक्विड फेंकते हैं किसी के ऊपर और फिर आप मैच स्टिक से भी जला के मैच स्टिक को भी फेंकते हैं उसके बॉडी के ऊपर, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो बर्न करेगा, है ना? साड़ी बहुत जल्दी कैच कर सकता है फायर को। इट्स कंबस्टिबल इन नेचर सारी। तो हाई कोर्ट डांटते हैं और वो कहते हैं कि ये इरोनियस है, इनका जजमेंट जो है सही नहीं है, उसमें एरर है। और हाई कोर्ट कहते हैं कि हाँ, तो सेशन जज का ये कहना था कि ये झूठ बोल रही है और अगर ये सच बोल रही है तो आप इसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट कराइए मटेरियल एविडेंस के साथ। ठीक है, तो हाई कोर्ट कहते हैं कि कोरोबोरेशन ना यहाँ पे रूल ऑफ कॉशन है। ठीक है, वो सिर्फ दो एक्सेप्शंस में यूज होता है, या फिर जब आपको लगता है कोई झूठ बोल रहा है तो हम कॉशन के तौर पे यूज करते हैं, ना कि रूल ऑफ लॉ है। There's a difference between rule of law and rule of caution. Rule of law means you have to apply it 100% in all the cases. Rule of law says this, and the rule of caution means in case where you have a doubt, in this case only you can apply that particular thing. So corroboration is not rule of law. Corroboration is not rule of law means corroboration is not allowed to be used in every time declaration. It is just meant for taking caution as to in case there is a good reason for the justice system, for the judiciary, for the judges to believe that the dying person can also tell lie. In this case, only the caution will be taken. Then medical reports checked, cross-examination done. These all are the rule of law and not rule of, sorry, these all are the rule of caution and not the rule of law. Then comes that the dying declaration was very much clear in nature. The lady who is on the verge of death, who is on the deathbed, she said that name of accused that Hiralal Patel has caused the death, sorry, has caused the burn. Then he also tell, sorry, she also tell that he that accused reached to her by scooter, and even the number was remembered by her. Then he also tell to the competent authority that that Hiralal was the son-in-law of Nanavati. In case there are two or more Hiralal in that particular society, so it is clear that the son-in-law of Nanavati is only one Hiralal. So this is very much specific in nature and very clear. We have read that Supreme Court has given the guideline that the declaration must be clear, exact, and in the same language with which the dying person has said. So this is fulfilling this. In this case, there is a fulfillment of everything. So there is no need to corroborate or just check the medical reports whether she is in a condition to
tell lie or tell truth. Then the judgment comes that Hiralal is the person, the accused who has caused death, और उसका डिक्लेरेशन एडमिसेबल होगा। और ये किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। हम मर्डर में आईपीसी में पढ़ते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मर्डर के, जिसमें कि आपको सडन प्रोवोकेशन हो जाता है, जैसे नानावती का केस था, जिस पे रुस्तम मूवी बेस्ड थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो चाहता था कि वो जलाए, और उसने अपने पूरे कॉन्शियस माइंड में पूरे मतलब किसी भी प्रोवोकेशन में वो नहीं था, वो बिल्कुल अपने माइंड में था, और उस टाइम पे ही उसने ये किया है incident. So he was the accused and he was penalized for the same offense. Now come some other points related to this, and we will now end up here only. The language of the declaration, in any language, it is not that uh, जो व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है गलत, वो किसी भी लैंग्वेज को बोल सकता है। ये ऐसा नहीं कि वो हिंदी बेल्ट से ही बिलोंग करे, इंग्लिश जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वहां से ही बिलोंग करे। तो वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उसके सारे लैंग्वेज को आपको जो भी बोल रहे हैं रिकॉर्ड करना है। फर्दर बाद में हम उसके लैंग्वेज को कोडिफाई वो कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा था। कंडीशंस रिक्वायर्ड है कि मेंटल फिटनेस होना चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं बोल सकता और डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है। उस केस में ये हो सकता है कि डॉक्टर्स वैसे चीजों को रिकॉर्ड कर ले जो एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लाइक डायरेक्ट डिक्लेरेशन तो एडमिट है, एडमिसेबल है डायरेक्टली एज एन एविडेंस। तो अगर वो झूठ का कोई एडमिट कर लेते हैं डिक्लेरेशन की, मरता हुआ व्यक्ति बोल के गया था कि ए ने तो मुझे नहीं ही मारा है, और ए ने ही मारा हो, तो उस केस में ए तो बच जाएगा, क्योंकि हम डिक्लेरेशन को डायरेक्ट एडमिट करते हैं। तो उस केस में मेडिकल विटनेस थोड़ा बहुत देखा जाता है। इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, लाइक मरता हुआ व्यक्ति भी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपके बेटे को मारने गया तो आप वही बोल के जाओ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। रिटेन को ज्यादा प्रीफर करते हैं ओवर ओरल डिक्लेरेशन, बिकॉज ओरल डिक्लेरेशन को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं बट रिटेन को नहीं कर सकते हैं। जेस्चर को भी आप